with one branch, computer science and engineering, with annual intake of 60. Later on in 2016, two new branches, electrical engineering and electronics engineering, with intake of 60 each, have been started. This college has been shifted to its own fully residential campus in the month of July 2017, and all academic activities from the session 2017-18 is running from its own campus. REC campus is well equipped with laboratories, libraries, workshop, cafeteria, mess, hostels, and other facilities for amusement. Faculties are the backbone of any institute and nation. REC Sonbhadra has good number of learned faculties, well educated from institutes of importance like IIT, NIT, and Central Universities. In academics, faculties need to be continuously updating their technical knowledge. For that, faculty development program must be a regular practice. Faculty development program is one of the good to share the knowledge by academicians, industry people. In the current pandemic situation, virtual platforms deals in most excellent way as it connects all the academician, researchers and students on a single window. The knowledge sharing will indeed improve the teaching learning process and benefit the technical teacher society. This faculty development program on Internet of Things IoT has a big significance at present time. The term Internet of Things IoT was coined in 1999 by John Kevin Aston, an engineer at MIT, Massachusetts Institute of Technology, work on the next generation of computing. Due to this enormous contribution, Mr. John Kevin Aston is widely considered as father of IoT. Internet of Things IoT refers to the billions of physical devices around the world that are now connected to the internet, all collecting and sharing the data. Major part of IoT systems comprises of distinct sensors, devices, connectivity, data processing, and a user interface. IoT finds huge applications and is helpful in many ways for mankind. For instance, in wearables, as virtual glasses, fitness bands to monitor the calorie expenditure and heartbeats or GPS tracking belts. Health, health, the use of wearables or sensors connected to patients allow doctors to I think he is muted. आप mute हो गए प्रोफेसर त्रिपाठी, mute करिए. Professor Tripathi, you are muted. Please unmute yourself. Director sir, mute. उपाध्याय जी म्यूट हो गए डायरेक्टर जी. यस सर, यस सर. तो उनको मैसेज दीजिए वो म्यूट हो गए. वी आर ट्राइंग टू कांटेक्ट हिम बाय फोन सर. बट मेरी तो वाणी जा रही होगी उनको म्यूट, ये तो सुन तो रहे होंगे वो. वेरी गुड. डायरेक्टर सर. बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग. फोन लगाइए. डीके सर. थैंक यू. So now I think either connectivity problem or no. He has been no, he is connected. He is connected. He is muted. Okay, so we may please continue. Hello. Yeah, he is okay. Yes sir. Yes sir. Yes. So IoT can be used in robotics and in weaponry system, Air Force weapons, which can function human aid. IoT is one of the emerging fields of research, had a great scope in future. The future of IoT has potential to be limitless. Our technical faculty is with great potential. Only requirement is that we have to apply ourselves in the right direction with right attitude. It may lead to formulate something incredible. As development of a nation depends upon technical innovation, so we
Technical teachers have a moral responsibility to carry on it, technical and making it technically sounder. It will be great support in the nation building. I hope that we all of us will be extremely benefited throughout all 5 days FDP. Each session of FDP will be very much imperative and interesting. So, uh, uh, for all the participants, listen and learn carefully the valuable experience and excellent ideas delivered by the esteemed experts. I convey my best wishes to all the participants. I congratulate to convener and all the participant staff members of this college who have worked a lot to make this FDP feasible. I wish a great success for this faculty development program. Thank you. Very nice. Thank you, Director Sir, for your motivational speech. Indeed, we are in your coordination, and that has made us to achieve up to this level. With this, we feel honored to invite Honorable Chief Guest of this session, His Excellency Professor Durg Singh Chauhan Sir, to show his blessings upon us. Chauhan Sir, please. Pranam sir. I am very indeed grateful to the organizers because I could meet Professor Khandal. Hamare Rakesh ji is very polite and his presence in the AKTU, which was earlier UPTU, I always, took food in his house because his liking and my likings are very common. And he is a very enthusiastic and very exciting personality and gave, a different trend in the university. After long breakage of the university, the continuous working, I, through this institution, the government of UP has started the, regions. And so they are become now RECs, Azamgarh, Sonbhat, Mirzapur, Bijnor, so many places they have, even Kannauj, Mainpuri, all those areas they have, started and established colleges. Now this FDP of 5 days, as your honorable director has told, and you are just almost devoting one full week. And so I think the teachers will be benefited. Those who are participating, they will be all benefited. In my experience, what I came to know, this IoT, when I was in Washington and this, Maryland, NASA, I was quite often visiting Carnegie Mellon University. That time they were doing something on the vendor machine of this Coca-Cola. They wanted to connect, anybody who is, the information, whether it is available, what the cost, and how it can be, ordered like that. But now you can see within 35 years where the entire progress has gone. This embedded, I was teaching, because my evolution also took place in computer science. I started my teaching from, the active circuit and BLSI, then signal processing. But I saw that when this embedded system I was teaching, now it become, a complete culmination of all the, technology from big data, from sensors, because I was in a NASA in a sensor division where I was working for, the higher vision of the robotics. And today I'm just watching that the device and machine to machine, any operation you can do, because device is very important, and machine to machine working, then communication, A to D conversion, D to A conversion, and various monitoring you have to do. Now the computer science become, not only a complete network that communication in devices, but the only problem in this will be a hacking later on.
because the security is not provided, hacking will be possible. Because when you are almost, this cloud computing, fetching data, then you are analyzing, making reduced code, then sending to the application side, and then you are doing lot of, the budgeting, and even you are paying GST or whatever you of any country, and then you are doing business with IoT. But the America first started from the home. This IoT was just like somebody was coming in the home, just entering into the garage. It was automatically opened, light was on, entire security was also monitored. So I have of the IoT. Now it has gone to a very big level, and you can see because of this cloud servers, cloud computing now become very common. So the big data and cloud computing is a very common, thing. So there must be one platform where you can just converge the entire technology from device to the end user, because IoT, this key means only the application, the internet of the things. That means that the internet, where there is internet, there must be some business, some true machine. So the intervention of the human is just, starting at one end and completing at another end. But there's a lot of devices and the machines and the softwares, hardwares, and then middlewares, you can say. So I think this entire technology nowadays is taking shape. So therefore, the teachers also, they must know, how to, operate on the big data, how to convert into the information useful for the society. And then when you are trending, this big data analysis, then you have to come across so many things, because the business is not from one country to another country or one, sector to the another sector. So this is a very big, exercise. And IoT, when it is dealing with the billions of the devices, so automatically it will be the challenge for all the technologists to, provide a smooth functioning of all the technical devices and machines, software, hardware, and where there is a need of, whatever kind of the technology you have to, bring at one platform. So I think in your 5 days, you will learn many things, but I think the entire platform you have to learn. Unless you are not from A to Z, the entire platform of the IoT, not it is only Python or the Java or the embedded system, but you have to learn from the machine language, then the big data, then the bad data, then what you call cloud computing. So many things you have to learn together, and then only you will be efficient for doing the work in this area. And computer is going to divide in many, directions, and you will find that later on, this entire IoT will be a one branch in the computer science. And experts and resource persons also requires in this area. And when Microsoft has come, they also have, I think, cloud computing, this Azure and IoT and this entire, things they have also designed. So I think IBM, Microsoft, Apple, all these big companies, they are now connected with this IoT. So I think you have invited the people from the Microsoft. You can invite people from the other, companies, and they will expose whatever they are doing in their area and how they are dealing this IoT. So I think today I'm very highly, grateful for the organizers, and also I'm just praying God that you should get, the glimpse of this IoT in a deep way. So your engineering college persons, and they will learn, how to teach this IoT. Now it has come into the picture since almost 5-6 years. IoT become now the one subject. Students are very excited. They are learning a lot of things, and this Python now become, a very common language. Java was earlier,
And Microsoft was always, very smart in making platforms, because I know that when I was attending this Malaysia with the Bill Gates, this .NET platform was brought for different kind of, the languages. So I think now IoT will also a big platform for hardware, software, middleware, and so many devices, communication, and then if when this cloud servers, and then when this business will start coming into picture, this will be a very deterrent, because security regions also we have to improve. Otherwise, the entire what you call this world connected with this IoT will have lot of problems. So I think when we are a researcher or we are a teacher, we must go in pros and cons of the technology, and where we have to strike a balance that we can contribute something new, because these are the big areas of the technology where now another 3-4 decades, will be devoted by the people. So bring, what you call to the people in the business. So I think the person wanted to work from the home, as now Corona is also, and the IoT is very, what you call user friendly for the person who is dealing, he is doing his work from the home. And this Amazon also, I think, is using IoT a lot in his business. So Apple is also very common. Microsoft is common. IBM is also. So I think a lot of things we have to expose ourselves with this new technology. But the software part and the hardware part, we have to learn at depth. And then cloud is another, area where not only computing, but various aspects of that also you have to learn. And how to use your M2M is a very big technology, because B2B is okay, but M2M, managing the automation in devices and the computers network, is a big challenge, So I think I pray God that you will get a real and right kind of the knowledge from the person, resource person who has come from the Microsoft. And Microsoft was always friendly with the AKTU, because when I was vice chancellor, I was always inviting the top leaders. सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए. And he was very happy while I told him that I was also working over there, because he was, I think, Harvard student, and did a wonderful work after leaving the Harvard. And his wife was also MIT or something, I think. So they both were working, in this technology. So I hope now the entire challenges of the technology will be taken up by IoT while you are working from the home. Thank you very much. And your director, Tiwari ji, Upadhyay ji, and our most dear, our Kandal Saab, if who can give you sweet halwa at the time at the home and various preparations. So thank you very much that you invited me for inaugurating this 5 days FDP under this Atal scheme. Thank you. प्रणाम सर, प्रणाम चरण स्पर्श. Sir, am I audible, sir? Audible, sir? I am audible, sir? You are audible, Yes. audible.
Audible, Yes. visible, everything is there. Thank you very much, sir. Not only for this FDP, but all of us are doing this. Everything is due to you. My personal, many of us may have met personally you or not, but I think that even every faculty of this technical institute is getting inspiration from you, directly or indirectly. You gave us a platform to work and a path to go. Thank you very much, sir. Now, we feel honored to invite Honorable Guest of the Honor, His Excellency Professor R.K. Khandal, sir, to bless us with his kind words. Khandal, sir, please. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हो आप. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर DS चौहान जी को चरण स्पर्श प्रणाम. सर आपके दर्शन हो गए. फोटो क्लियर नहीं है लेकिन हम तो सूरदास है, आपको अंतर्मन में देख ले रहे हैं और पूरे दिख रहे हो आप. नहीं, आप तो पूरे दिख रहे हो मुझे आप पूरे दिख रहे हो. सर आपकी कृपा आनी चाहिए. सब लोग दिख जाते हैं, जो अदृश्य होते हैं वो भी दृश्य हो जाते हैं आपकी कृपा से. आपने UPTU बनाया, आपने सोनभद्र जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, आपने कितने सारे, इनमें से बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारे HODs, डायरेक्टर्स आपके प्रताप से बने होंगे. मैं इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पुण्यात्मा को प्रणाम करता हूँ. और मैं इतना अनुग्रहित हूँ प्रोफेसर UP सिंह को कि इन्होंने मुझे भी आमंत्रण दिया और इतना बड़ा अवसर दिया आपके दर्शन करने का, आपको सुनने का. सर प्रोफेसर चौहान, आपको शायद ये विदित नहीं और शायद ये संज्ञान आप सोचते भी नहीं होंगे कि आपकी वाणी कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है सबका. बहुत बहुत प्रणाम सर. और आपने इतना अच्छा भाषण दिया, मुझे बहुत आनंद आया. आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर VP सिंह, प्रोफेसर UP सिंह, प्रोफेसर उपाध्याय जो कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं. और ये टॉपिक भी बड़ा टाइमली है और बड़ा टॉपिकल है. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी सुंदर प्रेजेंटेशन बनाई थी IoT पे, लेकिन पता चला कि सब 5-10 मिनट बोलना है तो मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतना अवसर दिया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो ये इंस्टीट्यूट सोनभद्र जैसे इतने पावन धरा पर ये विकसित हो रहा है, बट उससे भी अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये जो प्रोग्राम है IoT का, ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस चला रहा है. ये एक बड़ी अद्भुत बात है, बिकॉज इससे पता चलता है कि कैसे साइंस और इंजीनियरिंग एक दूसरे के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति पे आगे बढ़ने वाले हैं. मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ इस आज उपलक्ष्य में. जब मुझे बुलाया गया तो मैं आपसे शेयर करूं. मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ. सबसे पहली बात ये कि इंडिया में यदि हम देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई नई बात नहीं है. मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो कंपनी वर्ल्ड की गिनी चुनी कंपनियों में से है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कई वर्षों से उस प्रकार का काम कर रही है. एग्जैक्टली IoT नहीं, लेकिन मशीन टू मशीन और मशीन टू मैन कॉन्टैक्ट इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ. मैं सारे आप प्रोफेसर्स और सारी फैकल्टी को बताना चाहता हूँ कि आज से 30 वर्ष पहले ये प्लांट लगाया गया काशीपुर में और 500,000 टन्स ऑफ मटेरियल्स ये लोग बनाते हैं और कंप्लीट प्लांट DCS कंट्रोल्ड है. जब रिलायंस का प्लांट लगा, रिलायंस में DCS कंट्रोल को मोस्ट मॉडर्न समझा जाता था. इंडिया ग्लाइकोल्स में DCS कंट्रोल पूरा प्लांट एग्जिस्ट करता. इतना DCS कंट्रोल का इतना बढ़िया उदाहरण यदि आप बच्चों को लाएंगे और स्वयं भी एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा. पूरे प्लांट में आपको हार्डली यू विल सी एनी पर्सन वॉकिंग और एनी ऑपरेटर ऑपरेटिंग एनी वाल्व. All the control systems, electronics, instrumentation. In fact, we have such a huge electronics and instrumentation department in the industry, which ensures that not even a minute the plant is shut down. So you can imagine the DCS control systems are already in place for last 30 years. And IoT is nothing but taking these instruments together, connecting them with each other
not just through the local wire network, but the wireless network through internet. So about 6 years ago, when first time I went to China about Industry 4.0, we were discussing about the phases of industry, how industries are growing and how Industry 4.0 is going to be. And the key thing was Internet of Things. So here in India Glycols also, the chairman decided that let's put our machine on IoT. And when we started working on it, we found that there are so many dangers in this. प्रोफेसर चौहान ने बहुत बढ़िया से समझाया कि अमेरिका में सबसे पहले घरों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हुआ। आप जाएंगे उससे पहले गैराज खुल जाएगा। अभी तो लेटेस्ट जो है वो ये है कि टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आप केवल एसएमएस कर दीजिए या आप केवल बोल दीजिए कम देयर और वो कार अपने आप चल के वहां पे आ जाती है, थैंक्स टू दिस आईओटी। All the Tesla cars in the market in America are already on IoT, provided you allow them to be. Otherwise also you can have your own internet connection with the car, establish contact with the car and call the car wherever you want. But of course there are issues. अब जैसे मान लीजिए गांव में सबसे अच्छा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पानी देने का है। अब मैं एक ग्रामीण हूँ, अब गांव में बिजली आती है रात में 12 बजे। तो अब रात में 12 बजे और वो भी जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में हम लोग सरसों में जब पानी देते हैं रात में 12 बजे आती है, पता नहीं कब आए कब चली जाए। अब इमेजिन करो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अगर सारे पंप अगर जुड़े हुए हो आईओटी के थ्रू, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है खेत में, और आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पंप चला दिया और जब चाहा तब बंद कर दिया, और जिस फ्लो रेट से चलाया, जिस तरफ आप चाहते हो खेतों में पानी देना आप दे सकते हो। लेकिन समस्या है, मान लीजिए इंटरनेट फेल हो गया तो पानी तो बहता रहेगा, मशीन चालू हो गई। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो इंडस्ट्री में क्या इश्यू है? सबसे बड़ा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इश्यू है। अब मान लीजिए मेरा बैच चल रहा है, मैं नोएडा में हूँ और प्लांट चल रहा है काशीपुर में। मैं बहुत अच्छा है, मैं अपने स्क्रीन पे पूरे प्रोसेसेस देख सकता हूँ। हम लोग 700 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट, मोलासेस इज द रॉ मटेरियल, बिगिनिंग रॉ मटेरियल। मोलासेस जो शुगर इंडस्ट्री के वेस्ट है उससे हम लोग सारे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इंक्लूडिंग योर बेसिस फॉर टूथपेस्ट, बेसिस फॉर योर ड्रग फॉर्मुलेशन, सब कुछ। अब मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर पे सारे बैचेस देख रहा हूँ और पता चला मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, तो the competitor of India Glycols will get to know about all, not only process but also process details, recipes, everything will be known to him. तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया में और इंडियंस को बहुत सारा स्कोप है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे यदि हम फोकस करें। आपको याद होगा जब 2000 में जब ये इशू आया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम सारे शटडाउन हो जाएंगे, मुझे याद है 2 दिन 2000 में दिसंबर में मैं इंडिया ग्लाइकोल्स में था उस समय। आई वाज द हेड ऑफ द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग सर्फैक्टेंट्स। ये 2000 की बात है और 2000 में हम लोग 2 दिन 2 रात 2 दिन हम सोए नहीं थे, क्योंकि अगर हमारा डीसीएस कंट्रोल सिस्टम थैंक्स टू दिस 2000 एरा वी वर एंटरिंग इनटू 21st सेंचुरी और सब कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, इतना सारा हमने बैकअप रखा था। बात ये बता रहा हूँ कि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट को इतने जॉब्स मिले थे 2000 में, स्पेशली बाय द एंड ऑफ 2000। अब ये आईओटी एक ऐसा एरिया है जिसमें ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन सकती है जिसमें इंडियंस को जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि छात्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना पसंद नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उनको शायद ये ज्ञान नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द इन थिंग फॉर फ्यूचर, बिकॉज आपके कंट्रोल सिस्टम्स, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट इन द इंडस्ट्री आर गोइंग टू बी based on the most modern technology of electronics and communication. तो जब हम ये लगाने लगे तो पता चला कि इसमें इतने सारे खुले आए। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी मैन्युफैक्चर इथीन ऑक्साइड और सपोज somebody wants to damage or somebody wants to do some damage to the company, it is very easy if IoT, the security systems are not in place. तो हम बच्चों को, जैसे मान लीजिए इंडिया में अभी कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हैकिंग में। आई नो देयर वाज एन इंसिडेंट व्हेन आई वाज वाइस चांसलर यूपीटीयू, तो 2-4 बच्चे थे जो यूपीटीयू के पास आउट थे
और उन्होंने मेरे से ही डिग्री ली थी, कानपुर के स्टूडेंट थे। उन्होंने यूपीटीयू की वेबसाइट हैक कर ली और हैक करके टाइम्स ऑफ इंडिया में पेपर में न्यूज भी आ गया कि साहब यूपीटीयू वेबसाइट वाज हैक्ड। बट उन्होंने कहा हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, इट इज एथिकल हैकिंग। जब मेरे से टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने पूछा, मैंने कहा आई वुड लाइक टू मीट दीज बॉयज, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वो यूपीटीयू के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा कि यूपीटीयू वेबसाइट हैक एंड वाइस चांसलर वांट्स टू मीट दी हैकर्स। मतलब उन्होंने इसकी हंसी सी उड़ाई। फिर जब वो जो हैकर जब मिलने आए मेरे से, तो उन्होंने मेरे पैर छुए। उन्होंने कहा सर आप ही से डिग्री ली है और हम यूपीटीयू के स्टूडेंट हैं, हम तो केवल इतना बताना चाहते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है हैकिंग में और बच्चों को जॉब की चिंता नहीं करनी चाहिए और हैकिंग से तो हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा कैसे? बोले जी हम बैठते हैं, मोरक्को की कोई भी वेबसाइट लेते हैं और हम एम्बेसी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, ये जितने भी कंट्रीज हैं, और बोले इंडिया में भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट हैक कर लेते हैं, फिर उनसे बात कर लेते हैं, डील कर लेते हैं कि भाई आपका फ्यूचर में हैकिंग ना हो तो हमारा जॉब पक्का, हमको फीस भी मिल जाती है। और बोले एक दिन भी हम घर पे नहीं बैठते, वी आर ऑलवेज इन द प्लेन। अब इमेजिन करिए कि आईओटी में यदि हम बच्चों को ट्रेन करें और उनको बताएं कि कैसे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी। आईओटी के जो चैलेंजेस हैं, 9-10 चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे होंगे, केवल आप जाइए नेट पे, आपको आईओटी के ऊपर इतना लिटरेचर मिल जाएगा, इतनी सारी प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3 to 4 times the equipment which are on IoT today, 3 to 4 times should be there in 5 years time. Now imagine so much of data, so much of data analytics, so much of devices which are going online. I think the dangers are very big, and those dangers can only be dealt by students from India. So I think the computer science teachers, electronics teachers, they must train our students towards IoT. Now last में मैं वाणी को विराम देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि IoT का सबसे अच्छा उपयोग है तो वो है बालाकोट जैसे जो ट्रेनिंग, जो ये टेररिस्ट के कैंपस हैं, अगर इनको किसी तरह से क्लैंडस्टाइनली IoT से जोड़ दिया जाए और यहाँ बैठे बैठे ही भस्म कर दिया जाए। ऐसा हुआ होगा महाभारत में और इन सब में, हमारे पुराणों में कहीं चर्चा भी होगी इसकी। तो IoT का यदि उपयोग है तो इनको जड़ामूल से नष्ट करने के लिए होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको IoT से बचाने के लिए केवल प्रोटेक्टिव सिस्टम, केवल वॉल्स, फायरवॉल्स जो हमारे स्टूडेंट्स क्रिएट करें, हमारी फैकल्टी क्रिएट करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर यूपी सिंह को कि मुझे इस इतने हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम में बुलाया। प्रोफेसर चौहान के दर्शन हो गए, प्रोफेसर चौहान से आशीर्वाद ले लिया और डायरेक्टर सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लोग बहुत बहुत बधाई। निवेदन मेरा सारे पार्टिसिपेंट्स से ये है कि डू नॉट स्विच ऑफ योर वीडियो, बिकॉज दिस इज इम्पोलाइट टू कंडक्ट अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर यू कीप योर वीडियो ऑफ। बिकॉज एक टीचर, आजकल सारी वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, मेरा ऑलमोस्ट एवरी डे इतने वेबिनार्स होते हैं और इतना बुरा लगता है एक टीचर को यदि स्टूडेंट सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं और अपना सब्जियां काट रहे हैं या कुछ घर में कुछ कर रहे हैं या प्रॉपर्ली ड्रेस्ड भी नहीं है, वो भाव ही नहीं आ पाता। जब भाव नहीं आ पाता तो उसका प्रभाव भी नहीं आ पाता। तो मेरा निवेदन है सबसे, जिन के नाम मुझे दिख रहे हैं जैसे डेमो 12, सब लोग अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो पे देखें। जब हम अक्षु मिलाते हैं, जब आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन होती है। और जब एक दूसरे को देख के हम सीखते हैं, देखिए वर्चुअल क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो पढ़ाया जाता है वो इमीडिएटली समझ आता है, कंपैरिजन टू द रियल क्लास। रियल क्लास में ध्यान भंग होता है, लेकिन वर्चुअल क्लास में हम आमने सामने देख रहे होते हैं, ध्यान भंग होता ही नहीं और बोला भी बड़ा लिमिटेड जाता है, तो जो बोला जाता है वो सीधा रजिस्टर होता है। तो मेरा निवेदन है सबसे वीडियो ऑन करके करें, और बहुत अच्छा है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और यदि आप मुझे नेक्स्ट टाइम अवसर देंगे तो IoT पे मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा जो रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि समस्या ये होती है कि हम थ्योरी तो समझ लेते हैं, हमें प्रैक्टिकलिटी का आभास नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी का ज्ञान नहीं होता। in the industry where I am working today, it's so much highly advanced control systems। जैसा मैंने बताया, 1 मिनट का
Shutdown means crores of rupees. 365 days, 24 hours, the plant is running. And there is not one plant, all equipment, every equipment is on standby. So imagine if you, and safety की redundancy level देखिए, 3 levels of redundancy. जैसे मैंने बताया, मान लीजिए इंटरनेट चला गया और पंप चल रहा है, खेत में पानी जा रहा है, तो you should build redundancy levels and you must teach your students all about it. With these words, I thank once again Professor U.P. Singh, the director sir, Professor Tripathi, बहुत अच्छा आप इंस्टीट्यूट को चला रहे हो, और परम आदरणीय प्रोफेसर डी.एस. चौहान जी को मेरा प्रणाम और चरण वंदन। और सर आप आशीर्वाद बनाए रखें, और आप जो है थोड़ा सा आपका काम है घूमना, आप तो देखिए आपके पैर में तो व्हील्स लगे हैं, तो आप बनारस में मत फिक्स हो जाइए, और आप तो निकलते रहिए, आपको तो बहुतों का उद्धार करना है। पता नहीं कितनी अहिल्याएं हैं जिनका आपको उद्धार करना है सर, और कितने वो जो जुलाहे हैं जिनके, जो नाव में जिन्होंने पैर धो के पिया था भगवान राम का, तो आप पता नहीं कितने लोग आपके पैर धो के पीने के लिए उत्सुक हैं, व्याकुल हैं। तो आप बनारस में फिक्स मत हो जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपने मेरे लिए इतने शब्द कहे, उसके लिए तो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा, और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भूल ही नहीं सकता, आपका जो व्यक्तित्व कोई नहीं भूल सकता। Thank you very much, sir, for all the motivational and knowledgeable words you have delivered. You have been a symbol of inspiration, and we heartily welcome the suggestions raised by you. And I think we and our team and all participants will follow this. Thank you once again. I am surely thankful to my colleague Dr. U.P. Singh, coordination of this program, who gave me such a wonderful chance to be present in among dignitaries all together. Apart from this FDP, I would like to request Dr. U.P. Singh to organize some on-campus events. We will work as a team, and that will be a great day when all such dignitaries, Chauhan sir, Khandal sir, and all of them will be present in Sonbhadra, REC Sonbhadra. So thank you, all of you, once again. Now, I would like to invite my fellow Dr. Vijay Pratap Singh for vote of thanks. Vijay Pratap Singh, sir, please. Respected and our most distinguished chief guest of the day, respected Professor D.S. Chauhan sir, guest of honor Professor R.K. Khandal sir, director of our institute Dr. D.K. Tripathi sir, chairman of this FDP Dr. Amod Tiwari sir, program coordinator Dr. U.P. Singh sir, organizing secretary Dr. Harish Chand Upadhyay, and member of organizing committee and participants. It is a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks for this inaugural ceremony of 1 week online FDP on Internet of Things. I would like to propose a hearty vote to thanks to our most distinguished chief guest, Honorable Professor Durg Singh Chauhan sir, the founder Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Uttar Pradesh. And our guest of honor, respected Professor R.K. Khandal sir, former Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Uttar Pradesh, to grace this occasion with their presence. Thank you, sir, for sparing your valuable time for us. I would also like to express profound gratitude to our patron and director, Dr. D.K. Tripathi sir, for all motivation and support to organize this FDP on such a large scale for the first time in our college. Last but not the least, I am extremely delighted to express my sincere vote of thanks to the organizing committee members, the staff of REC Sonbhadra, who have worked very hard in making all the necessary arrangements to successfully handle this online FTP in Internet of Things. Once again, in the end, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you once again. Thank you.
थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सिंह। और मेरी ओर से आप अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर को प्रणाम प्रेषित कर दीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित कर दीजिएगा प्रोफेसर यूपी सिंह। Sure, sir. Sure. प्रणाम सर, चरण स्पर्श। हमें लग रहा है छोड़ दिया। ग्रेट आयुष्मान प्रणाम प्रोफेसर सर। सिंह, प्रणाम। खंडाल सर प्रणाम सर, चरण स्पर्श सर, दोनों लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए कि हम लोग ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर ले। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसे किसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि सही तरीके से निकल जाए। थैंक यू सर। दिख नहीं रहा। Yes, yes. So thank you, Vijay Pratap Singh sir. And after this, it will be better to take a 5 minutes break. Then after, we will start our first session. However, tea is virtually not available for us. So please, you may have a tea break at your home or in office. And after 5 minutes, we will start our first session. Thank you everyone, and hope you will gather just after 5 minutes. ఏందైతే వస్తున్నాయి వాయిస్ వినిపిస్తాము. వాళ్ళది వాట్సాప్ గ్రూప్ అవుతుంది. మీ వీడియో వస్తుంది మేడం, మీ వీడియో కనిపిస్తుంది. నా వీడియో కనిపిస్తుంది అంటే నా అటెండెన్స్ లిస్ట్ లో నా పేరు లేదు చూడు, అందరి ఉన్నాయి అంటే ఎవరో ఉండేవాళ్ళు, నాది కనపడట్లేదు. జూమ్ అనేది టీమ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు పెట్టారు కదా, లైక్ నేను లైబ్రరీ వెళ్ళకపోతే ఏం పెట్టిస్తాను. లైబ్రరీ మేనేజ్ ఉన్నా సార్, లైబ్రరీ మేనేజ్ వస్తుంది సార్. ఏమైంది సార్? తెచ్చారా సార్ అదే సాఫ్ట్వేర్? సరే సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. వచ్చినా కాల్ చేస్తాను సార్. ఒకసారి చూడండి, మీటింగ్ అటెండెన్స్ నా పేరేది కాలేదు మా, పొద్దున్న నుంచి చూస్తున్నాను నేను అటెండెన్స్ లిస్ట్ లో మనం లేము. కూర్చోను వాడు కూర్చో చెప్తాను. దాంట్లో సీయాలంటే వస్తారు, దాంట్లో మన నెంబర్ కానీ మన పేరు కానీ లేదు. అది నా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఊరికి కూర్చొని ఏం లాభము కదా, మనకు సర్టిఫికేట్ రాదు మళ్ళీ ఎఫ్డిపికి. అందులో నీకు పనికి వస్తుంది బా ఐఓటి. వర్కే సరిపోతుంది మేడం. ఏం లేదా, మొబైల్ ఆన్ చేసి కూర్చోట్లే. ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చేమో చూ.
ये क्या है? ज्वाइन, ये ज्वाइन, ज्वाइन, हम ज्वाइन है। హిందీలో अच्छा ज्वाइन करके జరా మీరు ప్రోగ్రామ్ మీ ఫాదర్ चेकिंग करके देखिए। భూములు తాగినట్టే నన్ను గుర్తించినారు మీరు. उनको मिलाए बेहरा साहब। नहीं चैटिंग करके दिखाइए। टीम्स वेब से चल रहा है, चैटिंग करिए, बंद करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए वही लिंक से। स्टोरी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर, अच्छा वो आप लेके उनके पास होगा ना? मेरा सर के पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग सब अलग अलग लेक्चर वाइज करें।